यार ये मुक्ति है क्या चीज़? मुक्ति मल्टीप्लेयर है, मुक्ति में शूटिंग है, मुक्ति में बैटल रॉयल मोड है, मुक्ति इंडिया में बना है, कहाँ पे बना है, कौन बना रहा है मुक्ति? मुक्ति एग्जैक्टली किस कैटेगरी का गेम है? ये सारे क्वेश्चंस और ऐसे बहुत सारे मैं आंसर करूँगा इस वीडियो में आपके लिए। व्हाट इज़ मुक्ति? So guys, Mukti is a first-person story exploration game and it is a brainchild of me and my creative director संकेश मोरे। हम दोनों ने इस गेम पे तकरीबन 3 साल प्री प्रोडक्शन पे काम किया है। इसकी स्टोरी इतनी फ्लॉलेस विदाउट एनी लूप होल्स, हम इसको अभी भी आज के डेट में ट्राई कर रहे हैं टू मेक इट दैट फ्लॉलेस। मुक्ति के बारे में अगर मैं एक छोटी सी जर्नी बताऊं तो मुक्ति आइडिएशन हुआ था इस वजह से बिकॉज़ हम लोग काफ़ी गेम्स खेलते थे। पर्सनली मैं अपने बारे में बताऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा नैरेटिव बेस्ड स्टोरी बेस्ड गेम्स खेलता था। गॉन होम वाज माय बिगेस्ट इन्फ्लुएंस बिफोर आई मूव्ड ऑन टू थिंकिंग अबाउट मुक्ति। और ऐसे काफ़ी सारे उस वक्त आए हुए गेम्स थे, जैसे फायर वॉच आया उसके बाद, एंड देन वैनिशिंग ऑफ ईथन कार्टर, व्हाट रिमेन्स ऑफ एडिथ फिंच। ऑल दीज गेम्स आर इंडिपेंडेंट गेम्स, इंडी गेम्स जो काफ़ी हैवी है नैरेटिव साइड पे। These are all narrative based story driven games जहाँ पे आप लोगों को मारते नहीं हो। You don't have a gun, you don't have any weapon to kill people, to hurt people. These kind of games are basically वॉकिंग सिमुलेटर गेम्स जहाँ पे आप एक्सप्लोर करते हो एनवायरनमेंट को, और मिस्ट्री जो होती है अराउंड दैट स्टोरी आप उसको एक्सप्लोर करते हो बाय एक्सप्लोरिंग द एलिमेंट्स इन द गेम। just for the sake of this game you experiment with the artifacts which are in the environment. Now talking about the core concept of the game, मुक्ति एक इंडी गेम है with a very high quality graphics because we are making this game in Unreal Engine, but because ये इंडिपेंडेंट गेम है वी हैव केप्ट इट इनटू अ लिमिटेड टाइम स्लॉट जहाँ पे गेम प्ले टाइम एक गेम का होगा अराउंड 4 hours, एंड इट्स नथिंग बट एन एक्सपीरियंस दैट वी आर ट्राइंग टू गिव इट टू पीपल। तो हम चाहते हैं कि लोग एक सीटिंग में इसे बैठे खेले एंजॉय करें, एंड दे गो थ्रू अ रोलर कोस्टर राइड जहाँ पे they get a visual treat of a beautiful story which is based in India. So yeah, the concept revolves around one of the biggest social issues in India, which is human trafficking, but we are honestly not not explaining or teaching people how to avoid it or how to eliminate it, but it is a story that revolves around this factor. स्टोरी एक्सप्लोरेशन गेम्स में ज़्यादातर आप लोगों ने देखे होंगे एनवायरनमेंट्स US बेस्ड, यूरोपियन बेस्ड, जो ग्लोबल गेम्स हैं उनमें होते हैं। द रीज़न दैट वी चोज मुक्ति इन एन इंडियन सेटअप इज़ बिकॉज ग्लोबल ऑडियंस हैज़ नॉट सीन मच ऑफ इंडियन content, and given the fact that India is very rich in culture, in mythology, in regional stuff, in cultural stuff, तो ये सारी चीज़ों को हमें गेम में लाना था। We wanted to showcase it to the world and show the beauty of India into it. एक बैक स्टोरी और है इस गेम की। व्हेन वी स्टार्टेड द आइडिएशन बैक इन 2017, वी अप्लाइड फॉर द बेस्ट अपकमिंग गेम ऑफ द ईयर एट IGDC, जो उस वक्त हैदराबाद में हुआ करता था, विच वॉज अ फिजिकल इवेंट। एंड उस इवेंट में 2 फाइनलिस्ट आए थे आउट ऑफ ऑल द गेम्स दैट वाज सबमिटेड इन दैट कैटेगरी, अपकमिंग गेम ऑफ द ईयर। देयर वर 2 games which are in the finals. One of them was Mukti and the other was Raji. You all know that Raji has done amazing good success that they got out of the game, but in that event we won the award and Raji stood on second. Now I'm not just blowing my own trumpet, it's a fact that I'm trying to tell you.
ki appeal that we saw during that showcasing that we did in 2017 at IGDC gave us a great confidence that people are liking this concept. People love what is coming out of India, and that is why we throttled it to an extent jahan pe we started talking to a lot of publishers for Mukti. There are a lot of things that are going on right now with Mukti in terms of the development, but I can't disclose it right now. But a quick overview देना चाहता था मुक्ति के बारे में. Again, summarizing the overall setup of Mukti. It's based in India, and it will have more than 2000 artifacts from India, because it somewhere connects you to the Museum of India, right? And it has all the artifacts which tell story about India. It has background of India. It has amazing monuments, amazing period time points jahan pe there were things that happened, and you just get to know these things by exploring those artifacts. It's a very challenging puzzle driven game as well, jahan pe there will be great puzzles into the game jo aapko solve karne hain, so that the story moves ahead. But apart from that, it's like a 4 hours horror experience that you'll get out of Mukti. And it's a first-person exploration game. Although it's an independent game, but we're trying to keep it to a AAA level artwork, visual quality. One of the things that I wanted to just plug in is YU Digital is one of the partners that we have, who are working on the visual aspects of the game, and the overall look and feel of Mukti is coming out really well. I just wanted to give you a brief about the game. Start हुआ था बहुत पहले प्री प्रोडक्शन में 2017 में, अब जाके प्रोडक्शन में वो फुल फ्लेजेड चल रहा है. Probably in a year we'll be able to bring that game out to you, but it's kick-ass. Mukti has a lot of USPs into it. Globally बहुत लोगों ने देखे हैं म्यूजियम्स जो US और यूरोपियन बेस्ड होते हैं, बट इंडियन बेस्ड म्यूजियम ग्लोबल ऑडियंस ने देखा नहीं है, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ हाइप अराउंड Mukti. And again, Mukti is something that underDOGS Gaming Studio is working on right now, and there's the only game that we're working on full-fledgedly. There are a lot of people who are supporting. One of them, the best, is Epic, who is putting all their efforts to help us bring this game to limelight, and push it to the global audience. इसके जो लिंक्स हैं, मैं बाकी वाले लिंक्स सारे बाद में आने वाले अपडेट्स में मुक्ति के बारे में जब भी बात करूँगा वीडियोस में तभी डालूँगा. बट अभी स्टीम पेज मैं आप लोगों को एक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली है. एक पुराना स्टीम पेज है हमारा जिसमें विश लिस्ट 2-3 हज़ार लोगों से ऊपर है, जो लोग वेट कर रहे हैं गेम के लिए. अगर आप भी इंटरेस्टेड है, विजुअल क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, सो डोंट गो ऑन द स्क्रीनशॉट्स दैट यू सी ऑन द स्टीम पेज, बट विश लिस्ट करना है तो विश लिस्ट कर दो स्टीम पेज पे, सो दैट यू विल ऑलवेज गेट नोटिफाइड अबाउट द गेम. And on my channel, this channel, I'll keep on talking about the updates of Mukti, because I am very excited about this game. The whole team is, and we are working really hard to get that next big thing from India, and we hope that we would be successful in doing that, because a great team is working on it, and we are in fact looking for a lot of people who can join us, who can work with us on Mukti. But ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये था कि मेरे ही सब्सक्राइबर्स में बहुत लोगों को पता नहीं है मुक्ति एग्जैक्टली है क्या. सो गाइज, मुक्ति इंडिया बेस्ड गेम है, इंडिया से निकल रहा है, एंड इट्स super anticipated game since a couple of years now. So stay tuned, keep watching the updates of Mukti. I'll put out the website links and everything later on when we set it up properly, but फिलहाल के लिए इतना ही. Just wanted to give you the brief of it. So guys, thank you for watching the video. If you like the video, please like the video. और अगर वीडियो चैनल को पहली बार डिस्कवर कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो चैनल से. कमेंट सेक्शन में कुछ डालना है तो
डालो, कॉन्वर्जेशन करेंगे उसी क्वेरी पे जो आप डालोगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।